Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 5 Rotational and Circular Motion Examples. Now example 5.1. An electric motor turns at 400 rpm. What is the angular velocity? What is angular displacement after 4 seconds? हमें क्या गिवन है? rpm गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है ओमेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी हमने फाइंड आउट करना है. टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड. गिवन है स्पीड इन आरपीएम 400 आरपीएम, टाइम t 4 सेकेंड. फाइंड हमने करना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो जो होता है S इज इक्वल टू वी इंटू टी. अगर हम लीनियर केस देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू वी इंटू टी अगर हम लेंगे तो S रिप्लेस हो जाएगा थीटा से, और V हो जाएगा रिप्लेस ओमेगा से, और T रिमेन्स T. तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T. नाउ फॉर ओमेगा जो हमारे पास है 400 आरपीएम, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 60. तो ये हमारे पास आ जाएगा इन रेडियन पर सेकेंड 41.9. Now theta is equivalent to omega t. By putting the values of omega and time t 4 second, we will get theta is equivalent to 167.6 radian. Now example 5.2. In a carnival ride, the passenger travel in a circle of radius 5 meter, making one complete rotation in 4 seconds. What is its acceleration? हमें radius given है, जो हमारे टाइम गिवन है फॉर मेकिंग वन कंप्लीट रोटेशन वो गिवन है, और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. गिवन है जो रेडियस 5 मीटर, टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन 4 सेकेंड, और फाइंड हमने करना है जो एक्सेलरेशन ए. नाउ जो हमारे पास वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t. By putting the values of r and t, we will get velocity is equal to 7.85 meter per second, and equation of acceleration is a is equal to v square over r. By putting the values of velocity and radius, we will get acceleration is equal to 12.3 meter per second. Now example 5.3. The curved roadway is designed in such a way that a car will not have to rely on friction to round the curve even when the road is curved with ice. जो हमारे पास कर्व्ड रोड है वो इस तरह डिज़ाइन की गई है कि जो कार है वो रिलाई ना करे ऑन फ्रिक्शन टू राउंड. जो कर्व है उसमें जो जब कार ने राउंड करना है तो वो फ्रिक्शन के ऊपर लाई ना करे, और ये तब कब जब हमारी जो रोड है वो कवर्ड हो आइस के साथ. सपोज द डेजिग्नेटेड स्पीड फॉर द रोड इज टू बी 12 मीटर पर सेकेंड. जो डेजिग्नेटेड स्पीड है कार के लिए उस रोड पे वो है 12 मीटर पर सेकेंड, और जो रेडियस ऑफ कर्व है वो है 36 मीटर. एट व्हाट एंगल शुड द कर्व बी बेंड? जो हमने कर्व देना है एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, जहाँ से गाड़ी में टर्न करना है वो किस एंगल पे होगा वो हमने फाइंड आउट करना है. सर्कल ऑफ रेडियस 36 मीटर, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. फाइंड हमने करना है जी एंगल थीटा. फॉर्मूला है जी tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर rg. नाउ by putting the values of velocity, radius and gravitational acceleration small g, we will get theta is equal to tan inverse of 12 square divided by 36.0 multiplied by 9.8, and after solving this equation we will get theta is equal to 22 degrees. Now example 5.4. A 2 kg mass swings in a circle of radius 50 cm at the end of light rod. What resultant torque is required to give an angular acceleration of 2.5 radian per second square? हमारे पास mass given है, radius given है, और अब हमने बताना है रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा जिससे जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. Given is radius 50 cm and in meter it would be 0.5 meter, mass 2 kg, angular acceleration 2.5 radian per second square. फाइंड हमने करना है जी टॉर्क. फॉर्मूला लगाएंगे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या और इसको हम कह सकते हैं जी दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट विच डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट. मल्टीप्लाई बाय अल्फा. अल्फा क्या है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन. टा इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई की जो इक्वेशन होती है वो होती है मैस डिवाइड मैस मल्टीप्लाई बाय रेडियस के स्क्वायर.
By putting the values of m and r, we will get moment of inertia 0.5 kg meter square. Twice equivalent to I alpha. By putting the values of moment of inertia and angular acceleration, we will get torque is equivalent to 1.25 Newton meter. Now example 5.5. Find Earth's angular momentum using Earth, Sun distance and mass of Earth. हमने Earth की angular momentum निकालना है किन किन चीजों को यूज करते हुए? Earth, Sun distance and the mass of Earth. Now Earth Sun distance जो है हमारे पास है वो है 149.6 into 10 is to power 9 मीटर और mass of Earth है 5.974 into 10 is to power 24 kg. Given है जी हमारे पास Earth Sun distance 149.6 into 10 is to power 9 मीटर, mass of Earth है जी 5.9742 into 10 is to power 24 kg. फाइंड हमने करना है जी एंगुलर मोमेंटम L. नाउ L की जो इक्वेशन होती है वो होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय v. नाउ v क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, या इसको हम लिख सकते हैं जी 2 पाई r डिवाइडेड बाय t. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r एंड t, जो कि हमारे पास है 365 डेज, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के गिर्द जो है वो 365 डेज में जो है वो अपना सर्कल कंप्लीट करती है. उसको सेकंड्स में लेके गए तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2.98 into 10 raised to power 4 meter per second. Now using the equation of angular momentum L and putting the values of radius, mass of earth and velocity v, we will get angular momentum L is equivalent to 2.663 into 10 raised to power 40 kg meter square per second. Now example 5.6. A body of moment of inertia 0.80 kg meter square about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of 100 radian per second. Calculate its angular momentum. Torque to sustain this position. Given है जी हमारे पास moment of inertia I, angular velocity. Find हमने करना है जी angular momentum and torque. Now जो हमारे पास angular momentum की equation L is equal to I omega. By putting the values of I and omega, we will get angular momentum of 80 kg meter square per second. And using the equation of torque, torque is equivalent to I alpha. By putting the values of I and alpha, अल्फा यहाँ पे जीरो क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? जब हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगी. तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर. Now example 5.7. A child of mass 25 kg stands at the edge of rotating platform of mass 150 kg and radius 4 meter. The platform with the child on it rotates with the angular speed of 6.2 radian per second. The child jumps off in a radial direction. What happens to the angular speed of the platform? Treat the platform as a uniform disk. जो हमारे पास गिवन है चीजें वो है mass of child 25 kg, mass of platform 150 kg, रेडियस हमें गिवन है 4 मीटर और हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है ओमेगा आई वो है 6.2 रेडियन पर सेकंड. फाइंड हमने करना है जी फाइनल एंगुलर स्पीड और इसमें हमने प्लेटफॉर्म को ट्रीट करना है एज अ यूनिफॉर्म डिस्क. नाउ जो इक्वेशन लगेगी यहाँ पे वो है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय initial angular velocity, yeah, initial angular speed is equivalent to moment of inertia of platform multiplied by final angular velocity. Now जो moment of inertia of platform है वो होगा 1/2 mr square, क्योंकि उन्होंने कहा हमने उसको यूनिफॉर्म डिस्क के तौर पे ट्रीट करना है. तो moment of inertia for disk होता है 1/2 mr square. By putting the values of m and r, we will get moment of inertia of platform 1200 kg meter square. Now moment of inertia of child mr square. By putting the values of m and r, we will get a moment of inertia of child 400 kg meter square. Now by putting the values of moment of inertia of platform, moment of inertia of child, initial velocity, we will get a final angular velocity of 8.27 radian per second. Now example 5.8. A 70 kg man is standing on a scale in an elevator which is accelerating as it heads for the top floor of a building at 4 meter per second square. What apparent will show on scale? मैथ हमें गिवन है और हमें जो एक्सेलरेशन बताई हुई जिस एक्सेलरेशन जिस एलिवेटर टॉप फ्लोर की तरफ जा रहा है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? अपरेंट वेट.
गिवन है जी हमारे पास मास 70 kg, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने करना है जी अपरेंट वेट। इन दिस केस जो हमारे पास अपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन होगा रियल वेट। तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। नाउ डब्ल्यू को हम रिप्लेस करेंगे एम जी से, तो ये हो जाएगा T माइनस एम जी प्लस एम ए, और एम जी वाली साइड को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। By taking m as a common, we will get t is equal to m into g plus a. Now, by putting the values of m, gravitational acceleration g, and acceleration a, we will get t is equal to 966 Newton. Now, example 5.9. Determine the orbital speed of International Space Station if its orbit 4.0 into 10 raised to power 2 kilometer above the Earth's surface. हमारे पास क्या है, हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। द रेडियस एट विच इट्स ऑर्बिट इज r इज इक्वल टू आर ई प्लस 4.0 इंटू 10 पावर 2 किलोमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास आ जाएगा जी 6.36 इंटू 10 पावर 6 मीटर प्लस 4 इंटू 10 पावर 5 मीटर। नाउ g हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। मास ऑफ अर्थ 6 into एक्सपोनेंट 24 kg। फाइंड हमने करना है जी ऑर्बिटल स्पीड। इक्वेशन लगाएंगे ऑर्बिटल स्पीड की, v is equivalent to square root of g multiplied by me divided by r. By putting the values of g, mass of earth, and radius, we will get velocity is equal to 7.67 exponent 3 meter per second. Now example 5.10. What should be the orbital speed to launch a satellite in a circular orbit 900 km above the surface of Earth? ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करना चाह रहे हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जो कि 900 किलोमीटर है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एच इज इक्वल टू 900 किलोमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 मीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 64 इंटू 10 मीटर। नाउ रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, हम रेडियस ऑफ अर्थ और जो हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा 73 इंटू 10 मीटर। जी हमारे पास कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10 - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 - 24 केजी। फाइंड हमने करने है जी ऑर्बिटल स्पीड। इक्वेशन लगाएंगे v is equivalent to square root of g multiplied by me divided by r. By putting the values of g, mass of earth, and radius, we will get a velocity is equal to 7.4 into 10 to the power 3 meter per second. Now that's all about the examples of chapter number 5. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all those which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.